Okay, so good morning, everybody. I am just waiting for more and more people to join in, and once they do, I will start with the session. The time is 8:51 a.m. right now, and yeah, right now we're just three of us, so I'll just wait for a few more people to join. Okay, so good morning, everybody. Welcome to day two of the Magic Book session. And yes, so regarding yesterday's exercise, before proceeding with today's session, I would love to, hear what was your experience if you guys did yesterday's exercise. So if you can just unmute yourself and tell us how was your experience once you did yesterday's exercise, which was count your blessings. And also let me know if you guys, also did this exercise before coming in for this session. Okay, so nobody wants to talk about anything about their experience or something. Am I audible to everybody? You can also write it down in the chat if you are, shy to speak or anything. Yes, you are audible. Okay. So any one of you who would like to share their experience related to yesterday's exercise? So like once you wrote down your blessings and then आपने अपनी पूरी list पढ़ी, फिर उसके बाद आपने हर एक blessing के लिए you started giving thanks, then आपको उस time पे like how did you feel? Yes, it actually feels very optimistic and it actually has a very positive vibe. Matlab, when I have even before I did this exercise, particularly writing down all the things I'm grateful for and reading that. So it actually feels very positive, and you are actually more grateful for the things you were not as grateful for before. So yet it actually feels good, and I have noticed that after taking this session every day, or after मतलब कल I was not able to attend the session, but I saw the session in YouTube, and then the day went actually very well and good. So yeah. Okay, so what all things did you see throughout your day, like after you did this exercise? क्या difference आया? Like, firstly, आपके emotions में क्या difference आया? जब आप ये exercise करने से पहले आपके क्या emotions थे? And after you did this exercise, उसके बाद आपको कैसा feel हो रहा था? Was there any shift in your emotions? Yes, there is certainly a shift whenever I do these magical exercises. There is certainly a shift. Matlab, after the exercise, when you have done so much of gratitude and these things, so you actually मतलब कि पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव ऑरा आ जाता है, क्योंकि आप इतना सारा ग्रैटिट्यूड या फिर ग्रेटफुल होते हो किसी चीज के लिए, तो वो खुद में एक बहुत पॉजिटिव चीज है. तो देन जो डे प्रोसीड होता है, तो उसमें आपके सामने जो भी चीजें आती हैं, तो उसको आप एक पॉजिटिव वे में देखते हो. तो
that's how the day changes. Okay, great. Anybody else who would like to share any of their experiences regarding yesterday's exercise? Okay, so before that, I think Satwik was there for the session yesterday as well, right? Yes. Yeah, I was. Right. So Satwik, can you tell us कि कल की exercise क्या थी? Like step by step, what all were the steps that we had to do? Uh, okay, I have to make a clarification that I unfortunately could not do the exercise, yet I will still go ahead and tell the steps. Is that all right? Okay, all right. So, step one is to write the 10 blessings that we could think of. That is like if we are grateful for our hands, if we're grateful for let's say if you're grateful for our parents, you can write that. If you're grateful for the life that we have, sure, we can write all of that. For instance, then at the end of each a blessing, we have to say thank you, thank you, thank you 3 times, so that we actually feel the emotion while we write that. Next is that okay, 1 second. All right, yeah. So the next step is that you So go are back. you checking your phone and reading everything, because then it doesn't solve the purpose. So अगर आप phone से देख के बता रहे हो to everybody, then it's all right. I will then ask somebody else. Yeah, actually, like I told the first two things on my own, then I forgot. I'm so Okay. sorry about that. So anybody else who would like to add on to his points? He just said कि हमें अपनी list लिखनी होती है, where we have to write down the things that we are grateful for, and then we have to go through our list, and हर एक blessing के end में हमें thank you thank you thank you बोलना होता है. But he missed out on a really really important point, जो main चीज थी Yes, उसकी. yes, And what was that? No, that we have anybody to. else apart from Okay, Shantanu, okay. because you've been here for the sessions for last 2-3 months. So anybody else apart from Shantanu who would, like to tell us what was that one important point which Satvik missed out on? You can also write it down in the chats. Also, आप एक बार chat पे लिख के भी बता दो, like if you guys did yesterday's exercise. If you did, then please write a yes. अगर आपने नहीं की, then write a no that you couldn't do it. So that I know that yes, the people who are attending are, also doing these exercises or not doing these exercises. Yes, okay. So Shantanu has done it. What about the rest? Couldn't do the exercise, did the exercise. Great. Who else? और किसने? बाकी सब ने like आप लोग ने क्या किया? आपने exercise की, नहीं की या फिर बीच का क्या होता है इसमें? आधी की, थोड़ी की, सोच लिया करने का, but what was it? Okay, so nobody else did the exercise. Okay, so somebody said that they couldn't do the exercise. Is it okay to share the reason why? Karan did. Great. I couldn't find a rock because I couldn't get the permission to go out due to my health. All right, no problem. Then maybe you could ask, somebody else to get a rock for you, because like this exercise is really important. Because जो आज की जो exercise है and जो कल की exercise थी, which is yesterday was count your blessings, and आज की है आपकी exercise the magic rock. So these two exercises हम लोग आज से like हर रोज like we'll be doing these two exercises every day. Yesterday was too busy. All right. Okay. Hello. Hello. Yeah, who's this? Hello, I'm Byrne. Okay. See, Yeah. Yesterday I couldn't attend the section, Mm-hmm. and I just watched it in YouTube. Okay. So I watched it around like by 11:30 p.m. All right. So I couldn't collect the stone and all these things, Mm-hmm. and I was hearing in the first part of the Hindi section.
Okay. and I could understand Hindi a bit. Okay. So meanwhile, you were explaining about things what you should write about and what are you blessed of. Yeah. So I thought of start to write now itself, Mm-hmm. and let me do the writing till it get to the English one. Okay. So All and right. I started to write and all these things. And by morning I wake up. Okay. Then I started to listen the later part. Okay. So the same chapter in English. English, yeah. Okay. You know what happened? Like I fall asleep in the middle. I was thinking and writing, and I fall asleep in the middle. Okay. Okay, and then and the morning when I completed the section, I heard someone ask that whether he could write it in the night, Yeah. and that time I was like, oh, what have I done? Have I done this wrong or something like that? Okay. Then So later on, I what just I mean, leave that thought. what your question is, because the time is 9 a.m. Okay, So like if fine, you can fine. just shorten your thing and just let me know your exact question or concern, whatever it is. I just wrote my blessings once again, and I even collected a stone. That's it. Okay, great. All And right. I feel good about when I writing this blessings. Great. Yes. So exactly. If you did this exercise, then great. If not, then I will highly recommend everybody to do this exercise. Is you count your blessings. This is the very first chapter, and this builds. This is your very foundation to this entire book. So it is really important for all of us to do this exercise every day. And सुबह उठते ही अगर आप कर लोगे, so उसके बाद जो पूरा day होता है, it gets busy. So a lot of people, they either forget या उनको फिर बाकी दिन में बीच में आलस आ जाता है कि छोड़ो यार अब तो मैं क्या ही करूँगा. It has happened with me, that is why I'm sharing कि अगर आप इस चीज़ को सुबह आने से पहले ही कर लो, then the better it is, because सुबह सुबह हो गया and then you can move forward with your day. So I have this diary with me, like I come here, my session is at 8:50, so I sit down on this chair like half an hour before this session, and then I write my blessings and then I start with the session. So that way क्या होता है कि मैं आके बैठ के मैंने कर लिया and then I join the session. फिर उसके बाद जो भी होता है I can move forward with my day. तो इसके लिए फिर मुझे बाद में अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, because then बाद में अलग से इस चीज़ के लिए टाइम निकालना might get a little difficult for few people, but then it is really really important that you guys do this exercise every day. ये सिर्फ एक दिन की भी exercise नहीं थी. We are supposed to do this exercise every day. So it's my request to everybody कि अगर आप कल time नहीं निकाल पाए थे, then please start taking out the time to do this exercise from now onwards. And अगर आपने अभी भी नहीं किया है session में आने से पहले, then just do it right after the session, and उसके बाद आपको जो भी करना होगा आप वो कर लेना. So once again, सात्विक ने बोला था first step is to write down the things you are grateful for. Second step is, which he missed out, was कि आपको reason लिखना था कि आप उस चीज के लिए क्यों grateful हो. So suppose I am grateful for this glass of water. So why am I grateful for this glass of water? क्योंकि इस glass में मैं पानी store कर सकती हूँ. I can carry it anywhere with me and आराम से I can drink water. और I am grateful to this water because it keeps me hydrated. तो आपने रीजन लिखा आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आपने पहले लिखा आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, and then you wrote the reason why you are grateful for it. Because this thing keeps me hydrated, yeah, because this thing makes me really really happy, yeah, because I could learn a lot from this thing. So suppose I personally am a self-taught musician, but most of the things that I've learned, it was from YouTube. So yesterday when I was writing down my blessings, I thanked all those people who upload these educational videos on YouTube for free. And why am I thankful, why am I grateful to them? Because they are selflessly uploading their videos for free, and people like us can access it and benefit from it. So I was really grateful to them because of this fact. So you can find out different reasons that you are grateful for different things, but writing the reason is like the main thing, because जब तक आप reason नहीं लिखोगे तब तक आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से फील नहीं कर पाओगे. सो वंस अगेन प्लीज जब आप लिखो,
do write down the reason, because that is the main point of that exercise. And जब आपने सारे अपने blessings 10 minimum 10 लिख ली हो, उसके बाद go through your list once again and हर एक list को मतलब एक एक करके जैसे आप अपनी blessings पढ़ रहे हो, हर एक blessings के end में आपको 3 बार बोलना है thank you, thank you, thank you. Okay, yes, that was the exercise for yesterday जो आपको आज भी करनी है, and आज से आगे वाले जितने भी दिन है 26 दिन आपको हर रोज करनी है. Okay. एंड फॉर दोज पीपल जो कल मैजिक रॉक कलेक्ट नहीं कर पाए थे, इट्स ऑल राइट, आपको ये एक्सरसाइज जो होती है आज रात को करनी है. सो मेक श्योर दैट यू फाइंड अ रॉक बिफोर you go off to sleep tonight. So yes, let's start with the reading of the chapter. It's 9-7. So we'll first read the chapter in Hindi, followed by reading of the chapter in English. So who would like to nominate themselves and read the chapter in Hindi? So somebody who can read a little fluently in Hindi, so that'll be better. Because I am not sure कि यहाँ पे हिंदी में कौन पढ़ सकता है, so I will let you guys nominate yourselves. Just write it down in the chat if you would like to nominate yourself for the reading in Hindi. Okay, so nobody wants to read, so I will only ask somebody. Okay, let me see. Okay, Karan, would you like to unmute yourself and read the chapter for us in Hindi? Okay. So, okay, what I'll do is I'll read the chapter in Hindi today, but it's my request to everybody कि हर कोई यहाँ पे. So when I started with these sessions, तब even I wasn't very fluent with my readings in Hindi. But जैसे जैसे I started reading, it kept getting better, a little better. So it's my suggestion कि आप पढ़ना शुरू करो in Hindi, and एक साथ आप eventually you will be better with your reading in Hindi as well. Sorry, there's disturbance in the background. Can't hear me. Okay, sure, no problem. So I'll read the chapter in Hindi and then somebody else can read the chapter in English. Okay. So दूसरा दिन जादुई पत्थर. आप अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े थोड़े हैं. चार्ल्स डिकिंस 1812 to 1870 लेखक. ओके, सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान पर भरपूर है, हर इंसान के पास भरपूर है. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? सो ओके, जनरली हमें क्या लगता है कि हमारे लाइफ में बुरी चीजें या प्रॉब्लम्स ज्यादा है, या फिर थिंग्स, बेसिकली लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा है compared to the things that we can be grateful for. But when you actually start to look, ठीक है, तो आप रियलाइज करोगे कि इट्स द अदर वे अराउंड. एक्चुअली में हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स ज्यादा है कंपेयर टू प्रॉब्लम्स या दुर्भाग्य हो गया, जो भी हो गया, जो सबके लाइफ में होता है. सो लाइफ इज व्हाट, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स, बट जैसे आपकी राइड खत्म होती है, अगर आप राइड में सक्सेसफुली बैठे थे, थ्रू आउट द राइड आपको स्टार्टिंग में डर लग रहा था, बट यू स्टिल वेंट फॉर इट एंड आप उस रोलर कोस्टर पे बैठे. एंड जब तक फिर तब तक रोलर कोस्टर पे आप एक बार बैठ गए तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप बीच में उसको बोल दो कि नहीं 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 भैया रोक दो, मुझे उतरना है, मुझे डर लग रहा है. फिर तो रोलर कोस्टर तभी रुकता है वंस द एंटायर राइड, जितना भी उसका ड्यूरेशन होता है वो खत्म होता है. सो सेम वे लाइफ इज द सेम, कि इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट जैसे राइड खत्म होएगी
आपको एंड में आपको लग तो रहा होगा कि यार मेरी तो ना मतलब आई वाज रियली स्कैर्ड, मेरी तो हवा टाइट हो गई थी या हालत खराब हो गई थी, बट अंदर ही अंदर यू हैव दिस रियली गुड फीलिंग, रियली दिस सेंस ऑफ फीलिंग कि यार एटलीस्ट मैं बैठ गई थी भले ही आंखें बंद करके, बट यस इन दी एंड वो जो जब रोलर कोस्टर ऊपर से नीचे आ रहा था, वो जो रश फील हो रहा था मुझे, या कुछ लोग को गुदगुदी होती है पेट में, सो स्टफ लाइक दैट, सो इट वाज ऑल वर्थ इट। आई एम श्योर जब भी कोई रोलर कोस्टर अगर आप बैठे हो उस पे, तो उसके बाद आपको जितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, बाद में भी आपको आके डर लग रहा होगा, बट यू नो इट्स लेस, एंड अंदर ही अंदर आपको अच्छा भी लगा। आई मीन यू डेफिनेटली एंजॉयड द राइड। So it's the same with life. There will be ups and downs, but then the ride is, you know, worth it, and it is always a joyful one. So yes, focus more on your present and past blessings. So present पे अभी presently अगर हम आज की बात करें, so अभी present day situation में आप देखो कि आपके life में कितनी blessings कितनी है, और एंड देन लुक फॉर कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी। सो प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में होती है, एवरीबडी इज यू नो, हर कोई का अपना अपना शेयर है इन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट सबके जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, बट दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टू वंस अगेन लुक अराउंड, आप देखोगे कि यू हैव मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट रादर दैन थिंग्स टू नॉट बी ग्रेटफुल फॉर। सो जस्ट you know, look around, look within yourself, and आप realize करोगे। okay, so इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ओके, सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, स्टार्टिंग में आपको लगातार कई दिन तक आपको यू नो करते रहना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आप सीखना स्टार्ट करते हो, सो ओनली इफ यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग डेली, तभी आपको इवेंचुअली आप उस चीज़ पे आप फिर कंफर्टेबल होते हो, एंड फिर वो नेचुरली आता है। सो इट्स द सेम विद ग्रैटिट्यूड। स्टार्टिंग में आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, डेलिबरेटली आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, बट इवेंचुअली क्या होगा कि आपने जैसे अगर आपने इसको 1 वीक तक भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, या 2-3 दिन तक भी अच्छे से कर लिया आपने, तो आप देखने लगेंगे कि आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज आने लगेगा। एंड डे 1 से अगर आप कंपेयर करोगे, तो डे 3 या 4 पे यू नो इट गेट्स जस्ट अ लिटिल मोर इजियर टू से थैंक यू, एंड थोड़ा धीरे धीरे नेचुरली आने लगता है। सो and इससे क्या होता है, once you start giving gratitude, once you start being grateful for things, then your life turns into gold, your life becomes even more beautiful. ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तिका में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया था, और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। सो इफ यू गाइस वॉच्ड द मूवी द सीक्रेट, तो उसपे एक एग्जाम्पल था कि एक पिता था जिसका बेटा वाज सफरिंग थ्रू सम डिजीज, एंड यू नो ही डिड नॉट हैव his son did not have a lot of time in this world, but फिर then he came across this person जो एक that person used to carry this रॉक विद हिम, जिसका नाम उसने उनको दिया था द ग्रैटिट्यूड रॉक। सो जब यू नो दिस डैड ऑफ दिस सन, उनको पता चला अबाउट दिस ग्रैटिट्यूड रॉक, एंड उन्होंने मांगा उस इंसान से, दिस पर्सन मेड श्योर टू सेंड हिम रॉक्स दैट यू नो एक्चुअली लुक मैजिकल, एंड उनको भेजा, एंड दैट उस लाइक द डैड ही स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर हिज सन्स हेल्थ या बाकी की चीजें जो जो अच्छी थी, एंड मिराक्युलसली क्या हुआ, हिज सन he recovered, and because of that Baki then, so once that happened, these guys started selling these magical stones to everybody, and unse jo bhi paisa ikhatta hua, you know, they invested it in a lot of other good things.
So this is basically your exercise for today. आपको सबसे पहले क्या करना है? You have to look for a rock. So इस एक्सरसाइज के एंड में आई विल शो यू, मतलब अपने 2 रॉक्स जो मैंने आपको एग्जांपल के लिए लेके आए हैं. आई विल शो यू दैट. सो लुक फॉर अ रॉक जो विच इज जो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका इतना साइज होना चाहिए कि आपके हाथ में फिट आ जाए, कि आप जब अपना हाथ पूरा बंद करो तो आपका हाथ पूरा अच्छे से बंद हो जाए. एंड इट शुडंट हैव एनी शार्प एजेस, एंड बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए. बेसिकली कोई भी ऐसा पत्थर जिसको आप अगर अपने हाथ में लो तो आपको पकड़ने में अच्छा लग रहा हो, आपको पकड़ने में लग रहा हो कि येस दिस इज समथिंग गुड. एंड इससे अगर मैं सो आगे जो भी एक्सरसाइज विल टॉक अबाउट दैट, बट बस हाथ में पकड़ के आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए. लुक फॉर दैट काइंड ऑफ स्टोन. यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं. यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें. हो सकता है आपके पास पहले से ही कई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं. जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले. यह ऐसी जगह होना चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें. अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके. यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले. आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उसे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले. दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें. फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए whoever is annotating, I would request you not to do it. Okay. So, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें. फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं. फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म. सो दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर टुडे. यू हैव टू लुक फॉर अ रॉक. आपको जहाँ से भी मिल सके, अगर आपको लगता है इफ़ यू हैव अ पार्क नियर बाय देन मे बी गो देयर, या अगर आपके घर में गार्डन है एंड यू हैव रॉक्स देयर, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता है then maybe you can also ask your neighbors, अगर उनके आसपास या उनके गार्डन में या उनके घर पे कोई रॉक हो, या अपने घर पे ही आप ढूंढ सकते हैं. सो द रॉक्स दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ, जो मुझे मिला था वो मुझे मेरे घर पे मिल गया था. तो जो हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे देयर इज दिस अ लॉट ऑफ काफ़ी अलग अलग टाइप के पत्थर रखे थे उसमें. सो दैट वाज मेनली फॉर डेकोरेशन एंड शो. तो उसमें से मैंने 2 पत्थर निकाल लिए थे जो मुझे दिखने में अपने लिए अच्छे लग रहे थे. सो आई टुक आउट दोज 2 stones. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक दैट अपने घर पे. तो जो पेपर होता है, आई मीन बहुत सारे पेपर के ऊपर जैसे लोग पत्थर रखते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, बट पीपल कीप सम स्टोन ताकि पेपर वेपर उड़ ना जाए. सो मे बी आप देख लो कि उसका साइज क्या है, मे बी यू कैन फाइंड अ स्टोन देयर. सो एनीवेयर आपको जहाँ से भी स्टोन मिल पाए, ट्राई एंड लुक फॉर अ स्टोन बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. इनफैक्ट अगर आपको शाम तक ही मिल जाए देन दैट विल बी ग्रेट, ताकि आप उसके बाद आप रिलैक्स्ड हो दैट यस नाउ यू हैव द स्टोन एंड ऑल यू हैव टू डू इज, जब आप रात को सोने जाओगे आप ये एक्सरसाइज कर लोगे. सो वंस यू हैव द स्टोन, आपको इस स्टोन को ऐसी जगह पे रखना है वेयर यू सी इट एवरी डे बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप. अब जब आप सोने जा रहे होते हो आपकी नज़र अपने स्टोन पे पड़ती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सोने से जस्ट पहले, वंस अगेन सोने से जस्ट पहले, ऐसे नहीं कि आपने पहले ये एक्सरसाइज कर ली फिर आप वापस अपने फ़ोन पे लग गए हो या कुछ और करने लगे. दिस एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन राइट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. तो ये लास्ट चीज़ होनी चाहिए जो आप करो अपनी आंखें बंद करने से पहले, सोने से पहले. सो आपको ये पत्थर हाथ में लेना है एंड देन यू हैव टू गो थ्रू योर एंटायर डे. एंड आपको सोचना है आपके पूरे दिन में आपने जितनी भी चीज़ें की या जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई उसमें से बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको उस दिन की.
सो जो भी बेस्ट चीज हुई आपके हिसाब से उस दिन में, आपको उसके लिए यू हैव टू से थैंक यू फॉर दैट पर्टिकुलर डे. एंड इससे क्या होता है, जब यू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट एंड द बेस्ट थिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट, तो इन द प्रोसेस यू आर ऑल्सो अक्नॉलेजिंग अदर थिंग्स जो आपके पूरे दिन में अच्छी हुई है. सो इन अ वे आप अपने दिन की सारे चीजों को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, बिकॉज यू आर एक्नॉलेजिंग कि हाँ यार ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा होता, ये भी अच्छा होता. एंड फिर उसके बाद आप उसमें से सबसे अच्छी चीज ढूंढते हो. सो सम डेज क्या होगा, आपको तुरंत पता होगा कि नहीं मुझे इतने सोचने की जरूरत थी, मुझे पता है कि यही बेस्ट चीज हुई थी. बट अदर डेज जब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, सो दिस ऑल्सो हेल्प. बट मैं क्या करती हूँ, सपोज अगर मेरे दिन में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, सो आई नो कि हाँ यार ये तो बेस्ट चीज हुई थी, बट आई स्टिल गो थ्रू माई एंटायर डे टू थिंक फॉर एनीथिंग एल्स दैट माइट बी बेटर, जिसके लिए मैं शायद थोड़ा और ज्यादा थैंक्स दे पाऊँ, या ये ज्यादा अच्छी चीज हुई थी. इफ आई स्टार्ट टू लुक एट इट एट अ डीपर लेवल, तो समटाइम्स आई ऑल्सो रियलाइज कि नहीं यार, ऑल्दो ये चीज तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, but this particular moment that I shared with somebody, yeah, with my parents or with my brother, that was much more beautiful than that this other thing that I received or this other thing that happened. So जब भी आप ये एक्सरसाइज करो, just go through your entire day, सुबह से लेके रात तक, and then find the best thing that happened during the day and say thank you for that particular thing. And अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए. सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे. अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे. पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है. जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी. अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे. अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें. वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे. लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है. इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी. जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं. जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी. ओके, सो यू हैव टू डू दिस मैजिक रॉक एक्सरसाइज स्टार्टिंग टुडे एवरी नाइट. जब भी आप सोने जाओ, सो येस्टरडे समबडी वाज आस्किंग इफ दे कैन राइट देयर ब्लेसिंग्स एट नाइट. नहीं, आपको अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली एक्सरसाइज सुबह में करनी है. एंड दिस मैजिक रॉक एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप एवरी नाइट. तो इससे क्या होता है, जब आप सोने जाते हो, यू स्लीप ऑन अ गुड नोट. एंड अक्सर होता है आप जिस मूड से आप सोने जाते हो, नेक्स्ट डे आप रियलाइज करते हो आप ऑलमोस्ट उसी जोन में उठते हो. सो इफ यू गो ऑफ टू स्लीप विद अ ग्रेटफुल माइंड, तो जब आप सुबह भी उठोगे, यू विल वेक अप विद अ रियली रियली गुड फीलिंग. एंड उठते ही जैसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स एक्सरसाइज करते हो, यू मेक श्योर कि आप जिस फीलिंग से उठे थे वो फीलिंग आप कंटिन्यू कर रहे हो by counting your blessings, and then it guarantees a really really good day forward. And so these two exercises are very powerful in itself. अगर आप बस यही दो exercises भी रोज करोगे, तो भी you will start seeing changes in your life, but then that could take you longer than 2 or 3 months. But this book has been designed in a way कि आपकी life you will start seeing
change happen in your life within 28 days. So it's my request to everybody once again कि यहाँ पे daily के जो भी assignments दिए जाते हैं, please do those assignments daily, तभी आपके जिंदगी में results जल्दी आएंगे. आज के टाइम पे everybody is falling short of time. हमको चाहिए कि सारी चीजें जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेटर है. So if you really want to see changes in your life happening really quickly and accelerate हो जाए magic आपके life में, so आपको ये जितने भी exercises है जैसे जैसे बोली गई हैं ठीक उसी तरह अगर आप करेंगे तो it is guaranteed that you will start seeing आपके life में in fact 28 days के अंदर ही यहाँ पे लोग इतने सारे magics experience करने लग जाते हैं. They start manifesting a lot of their dreams. So, but like provided you do the exercises the way this book is telling you to do, and जैसे जैसे आप ये exercises करोगे आपकी जो magnetic power है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि आपको eventually आप कम मेहनत भी करोगे but आपकी magnetic power इतनी strong है कि आप जो चाहोगे मुश्किल से मुश्किल चीज़ आपके पास खिंची चली आएगी. So anything that you want जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है वो सारी चीजें भी आपके लाइफ में आने लग जाएंगी. यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज गुड थिंग्स with the abundance. You will start attracting those things in your life. So this is your exercise for today. जादुई स्मरण. So आज आपको क्या करना है, you have to look for 3 photographs. आपको वो फोटोग्राफ क्या करना है. So कल की जो एक्सरसाइज है it is called magical relationships. तो okay wait, first let me read. First read this and then I will tell you about tomorrow's exercise. जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर. पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए. लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची दोबारा पढ़े. हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें. एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले. आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे. 4th, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे. 5th, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराए. 6th, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले. So I am telling you about tomorrow's exercise in advance. So tomorrow's exercise is called magical relationships, जिसमें you have to choose any 3 relationships in your life जिसमें आप improvement चाहते हो. So not necessarily कि वो relationship आपका अभी खराब चल रहा है. So you can choose any kind of relationship. अगर आपका किसी के साथ relationship अच्छा भी है, but if you want your relationship to flourish even more और ज़्यादा अच्छा होता जाए, so you can choose those 3 kind of relationships. या you can choose a mix of these kind of relationships कि किसी के साथ अभी आपके relationships are not so good, अभी ups and downs काफी आ रहे, काफी लड़ाइयाँ हो रही है. So एक person आप ऐसा चुन सकते हो and this other person you can choose जिसके साथ आपकी ठीक ठीक चल रही है. So I mean it's like normal, it's very casual. जैसे हमारे friends होते हैं कि बात कर लो तो भी ठीक है, नहीं भी करो बहुत टाइम तक बात, it's all right. So you can choose those kind of relationships too कि जिनके साथ बुरा भी नहीं है but you think बहुत ज़्यादा great भी नहीं, it's just very normal. And third could be कि जिनके साथ आपके relationships अच्छे हैं but आप उसको और level up करना चाहते हो your relationships. So you can choose a combination of all these 3 things. Yeah. So basically anybody जिनके साथ आप अपना relationship किसी भी way में improve करना चाहते हो, you have to collect individual photographs of all these 3 people. Once again individual photographs. Suppose आपने अपना एक friend choose कर लिया, you chose your mother and then you chose your father. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने पापा की separate picture लेनी है, अपने मदर की सेपरेट पिक्चर लेनी है एंड अपने फ्रेंड की सेपरेट पिक्चर लेनी है. इफ योर क्वेश्चन इज कि अच्छा मेरे पास मेरे मम्मी पापा की लाइक आई हैव अ पिक्चर जिसमें दोनों एक साथ है, सो कैन आई यूज दैट? नो, यू हैव टू टेक इंडिविजुअल पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज 3 पीपल. ठीक है. एंड फिर उसके बाद जो बाकी की जो एक्सरसाइज है वी विल डिस्कस अबाउट दैट टुमारो. बट टुडे कलेक्ट 3 इंडिविजुअल पिक्चर्स. आप जैसे हार्ड कॉपी होती थी पिक्चर्स की, यू कैन चूज दैट. अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है उस टाइप की, then in that case अगर वैसे individual pictures नहीं, आप अपने phone में also you can download their individual pictures या उनकी group में pictures है तो उसमें से आप crop कर लो ताकि आपको फिर बस वही एक व्यक्ति दिखे.
So this is what you have to do today to be ready for tomorrow's exercise. And कल की exercise because हमें रात को नहीं करनी है. So today we had an option कि आज की exercise रात को करनी. So you still have today's time to look for the rock. But जो कल की exercise है that we have to do, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी है. So look for the pictures, for 3 pictures, 3 individual pictures today itself. Okay, so now who would like to read the chapter in English? Shantanu has already read, so I would want somebody new to read the chapter in English today. So somebody who's not yet read any of the chapters of it, I would request somebody new to nominate themselves today. Maneswita, I can try, but my connection is a little on and off today, intermittent. So, and all right, that's not a problem. I mean, you can give it a go. Agar lagta hai ki like there's some problem with the internet, then we can choose a new reader. But meanwhile, you can start. Yeah, and just to say, I have hard stop today at 10. So let me just start 1 second. Yeah. I was actually logged in from my phone, so maybe I can log in from a laptop. You can also, zoom in from your phone because as it is Hindi ke fonts, sorry, English wale fonts, they are bigger. So you have an option to zoom in from your phone as well. If that's okay. Yeah, I'm doing just that. All right. So I'm going to read from what is displayed on the Zoom screen. Okay, yes. The magic rock. Sorry, 1 second. The magic rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have the same. Charles Dickens, writer. Okay. In the Once beginning again, of working... just a moment. Once again, reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. अपने present पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको reflect upon your present blessings, because अभी at this very moment आप अगर देखोगे तो you can look for more things to be grateful about instead of again going back to your past and then बोलने ये बोलना कि यार past में तो मेरे साथ ये हो गया था और this thing went bad, this thing went wrong. So instead of talking about your past and being stuck in your past, it's much better to focus on the things that you presently have. Why? Because अगर आप अपने present blessings के लिए आपके पास अभी presently जो चीजें हैं, if you are not being grateful for those things, तो suppose presently if like whatever amount of money that I have in my life, अगर मैं उसके लिए grateful नहीं हूँ, so let's imagine that जो पैसा है it's like a person who has feelings. तो अगर आप पैसे के लिए आप grateful नहीं हो रहे हो तो पैसा क्या बोलेगा कि यार इसको तो this person doesn't respect me, this person doesn't realize my worth, this person doesn't appreciate me, तो मैं क्यों आ रहा हूँ. तो वो जो थोड़ा बहुत पैसा भी होगा वो भी आपसे this person will get angry and वो पैसा चला जाएगा. So it is very important कि आपके जो present पे आपके पास चीजें हैं, you focus on that and जितनी भी चीजें, so whatever it is that you have right now and आप अपने life में जहाँ पे भी हो, think about all the things that you can be grateful about, because you can definitely not change your past, but आप अपना future change कर सकते हो. But to change your future you first have to change your present, and उसके लिए आपको क्या करना है, you have to reflect upon your present blessings जो हर किसी के life में बहुत ज़्यादा होती है. If you start to look, आप realize करोगे कि हाँ यार problems कम है मेरे life में, blessings ज़्यादा है. Okay, continue. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you to turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what the magical practice is about. Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret film and book, where he told us the story of a father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery.
Since then, The gratitude rock has. uh, yeah, since then, the gratitude rock has been proven a success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close with your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from the riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, before you get into bed to go to sleep, pick your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened to you that you are grateful for. Then say these magic words. Thank you for the best thing that happened. Return the magic rock on its place by your bed, and that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go, Sorry, just a moment. So once sure, again, आपका जो rock होगा, it has to be a rock, not anything else. कोई crystal का कोई rock जैसी दिखने वाली चीज नहीं. Not a diamond or nothing made of glass. It should be a rock or a stone and pebble. nothing else. All right. And once again, उसको smooth होना चाहिए. It shouldn't have rough edges. It should be light. Basically, it should be, it should make you feel good जब आप उस rock को देखो या पकड़ो and आपके हाथ में fit आ जाना चाहिए. Okay. Yeah. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you can actually be thinking, You are you can actually actually be, thinking. oh, sorry, you're actually thinking of many things that you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude every day, Each day. Yeah. each day. The Count Your Blessing and Magic Rock practice ensures that you begin and end the day, end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and everything you Need want and need to to do. you. Yeah. Okay. So आपको क्या करना है once you have this rock, आप जहाँ से भी लेके आओ, I mean look for different areas जहाँ से आपको लगता है आप ये rock you can get this rock and maybe try and get 2-3 rocks ताकि and then share your pictures. आप अपने rock की picture please share it in the group so that I can also make sure and check if you found the right kind of rock or not. And yes, so once you have a rock, उसके बाद आपको क्या करना है that you have to keep it on your bedside, ऐसी जगह पे जहाँ आप उसको just सोने से पहले देख सको.
So suppose अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो जस्ट सोने से पहले, so maybe you can keep your rock near your charger or something, या अगर आप अलार्म क्लॉक लास्ट चीज़ सेट करते हो, keep it near your alarm clock, या अपने जस्ट पिलो के बगल में रख सकते हो. So basically anywhere where you will definitely see it before you go off to sleep. एंड इस एक्सरसाइज में कहा है कि आपको ये एक्सरसाइज कब करनी है, नॉट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, बट इट इज सेइंग जस्ट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. तो ये जो जस्ट वर्ड है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको ये लास्ट चीज करनी है बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. तो अगर सपोज अगर आपने एक्सरसाइज करी, आपने ग्रेटिट्यूड दिया एंड देन यू वेंट ऑफ टू स्लीप, बट फिर उसके बाद कोई आ गया और कोई आपको आके किसी ने डिस्टर्ब कर दिया कि अच्छा सोने जा रहे हो क्या, या सो रही थी क्या, या ये काम कर दो, या यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम समबडी एंड फिर आप उससे कॉल पे बात करते हो और आप फिर वापस सोने जाते हो. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज वंस अगेन. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज जस्ट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. तो इस एक्सरसाइज का एम ही यही है कि आप जब सोने जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑफ टू स्लीप विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड. तो जस्ट इन केस आप ये एक्सरसाइज एक बार कर लो एंड कोई और आके somebody else disturbs you or wakes you up from your sleep, then again do this exercise once again and then go off to sleep. And इससे क्या होता है, you make sure that you go off to sleep in a very good mood and gratitude के साथ. तो जब आप उठते भी हो, आप उसी अच्छे जोन में उठते हो. And once you wake up, आपको अपनी count your blessings वाली एक्सरसाइज करनी होती है. And these two practices ensure कि आप जब सोने जा रहे हो, आप अच्छे मूड में सो रहे हो, आप उठ अच्छे मूड में रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर डे ऑन अ वेरी गुड नोट. एंड वंस अगेन ये जो एक्सरसाइजेज है, दीज टू एक्सरसाइजेज आर वेरी पावरफुल इन इटसेल्फ. द रीजन व्हाई दीज टू एक्सरसाइजेज स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में बता दी गई है, बिकॉज इसमें इतनी पावर है. सो दिस इज योर फाउंडेशन. दीज टू एक्सरसाइजेज आपको हर रोज करनी है. एंड ये बिकॉज ये फाउंडेशन है आपके एक्सरसाइजेज की, तो इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर आप बस यही 2 एक्सरसाइजेज रोज करोगे, so you will start to see changes in your life happen within a few months. but अगर आपको कुछ ही दिनों में चाहिए, then do this book the way it is designed. हर रोज जो भी अलग अलग एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी आपको, also do that. So take out time. So if you want to see some changes in your life, then you have to take out time for it. मैंने I keep on hearing people कि यार मुझे कितने टाइम से गिटार सीखना है, but I am not able to find the time for it. या मुझे ये चीज करनी है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. बट पर्सनली आई फील दीज थिंग्स आर जस्ट एन एक्सक्यूज जिनको. सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, यू विल ऑलवेज ट्राई एंड मेक टाइम फॉर इट. एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज किसी को सुबह अगर नॉर्मली आपको अगर कोई बोल दे कि अच्छा सुबह सुबह जल्दी उठना है एंड यू आर नॉट एन अर्ली राइजर, तो उस टाइम आप बोलोगे कि नहीं यार पागल हो गया, मैं क्यों उठूं, मतलब आई कांट डू दिस. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आप इवेंचुअली यू विल गिव अप, या आप 1-2 दिन में भी आप उठोगे, उसके बाद यू विल स्टॉप डूइंग इट. बट ऑन द अदर हैंड, सपोज सुबह 6 बजे उठ के कोई आपका इम्पोर्टेंट काम है विच यू रियली हैव टू डू, तो ऑटोमेटिकली भाई हमारी नींद इट वी वेक अप अराउंड, सपोज 6 बजे आपको उठना है तो आपकी 5 मिनट पहले ही नींद खुल जाएगी. व्हाई? बिकॉज यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि नहीं मुझे 6 बजे उठना है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट वेक अप, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. तो आप उसी माइंड फ्रेम में सो के जाते हो कि नहीं मुझे सुबह उठना है. तो आपके माइंड को ऑलरेडी पता है कि नहीं इस पर्सन को सुबह उठना है. तो अक्सर क्या होता है, अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है. सो दिस इज हैपेंड विद मी. अगर आपके साथ भी हुआ है, देन जस्ट राइट डाउन अ यस इन द चैट्स कि हाँ, उस केस पे आप उठ जाते हो, आपको कुछ आलस नहीं आता, कुछ नहीं सोचते कि यार मैं तो जल्दी नहीं उठ सकता, आप उठ जाते हो. दिस इज हैपेंड विद मी पर्सनली. मैं मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता था, बट जब भी सुबह मुझे कोई काम होता था टू गेट अप एंड कुछ म्यूजिक रिलेटेड काम होता था, या मुझे किसी शूट के लिए जाना होता था, या कोई प्रैक्टिस होती थी सुबह सुबह, तो ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाती थी एंड आई यूज्ड टू वेक अप फ्रेश, बिकॉज मैं उसी माइंड से सोने जाती थी कि नो आई नीड टू वेक अप. सो सेम वे फॉर ऑल दीज एक्सरसाइजेज. अगर आपको गिटार सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, so you will take out time for it. आप अपने स्केड्यूल में आप देखोगे कि कहाँ you can take out at least, even if that means taking out 15 minutes, you will look for that time अपने पूरे स्केड्यूल में, बिकॉज हम सबके पास बहुत टाइम होता है, वी जस्ट डोंट रियलाइज. सबको लगता है कि मैं पूरे दिन में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ बिकॉज मैं जॉब करता हूँ, सो आई एम अ रियली बिजी पर्सन. जब तक मैं वापस आता हूँ आई एम जस्ट क्या बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट. एंड उसके बाद all I want to do is lie in bed, watch Netflix, watch some movies and stuff like that.
So, you can actually take out some time from your Netflix wala time, invest 15 minutes in learning guitar. Same way for these exercises, take out time for these exercises because these exercises are life changing. अगर आपको अपने life में सच में change चाहिए, then you will take out time for it. फिर lazy होना, it is not going to help you. And okay, gratitude की power, once you start doing this, eventually क्या होगा, you will be so good with these exercises कि आपकी magnetic power, आप जो gratitude feel करने लगोगे वो बहुत ज़्यादा feel करने लगोगे. And eventually क्या होता है, the more deeply you feel gratitude, उतनी ज़्यादा आपकी magnetic power होती है, and उतनी easily you will start attracting things that you want in your life. Okay, magic reminder. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened that day. 4, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. 6, read tomorrow's magical practice today. Right. Okay. Thank you, Neeta ji, for reading the chapter for us in English. And yes, so tomorrow's exercise is day 3. As you guys can see here, it's called the magical relationship. So आपको क्या करना है? You have to look for 3 people जिनके लिए आप अपना gratitude देना चाहते हो, and collect their pictures. And these pictures, they need to be individual pictures of those people. And हाँ, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में पिक्चर नहीं है, then you can also keep it in your phone. Like whenever I do this exercise, मैं अपने phone में like I download their pictures या मैं crop कर लेती हूँ, and then I do this exercise. So just collect 3 pictures. कहीं पे भी अगर आप अपने laptop पे collect करना चाहते हो, keep it in your laptop. अपने phone में keep it in your phone, या अलग से अगर आप picture रखना चाहते हो, so you can do that. बस the point is कि individual pictures होनी चाहिए. Picture में बस आपको वो ही दिखना चाहिए, वो ही person दिखना चाहिए, and nobody else. So that's what you have to do today to prepare yourself for tomorrow. And then yes, also find a magic rock. So here I have 2 rocks with me, which I usually use. So this one is actually my favorite one. ये इसमें white है, so I थोड़ा background आ रहा होगा, but yeah, this is the type of rock that I have for myself. एक ये है, and the other is this. So ये दोनों जो rocks है, इनका जो size है, it perfectly fits in my hand, and this has got no rough edges as well. So इनका जो size है, they are light enough, and मुझे दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, so I just got it for myself. And this rock, these both these rocks, they perfectly fit in my hand. तो आप ऐसा भी कोई भी रॉक चूज कर सकते हो, या आई ऑल्सो सेंट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स इन द ग्रुप जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स ने अपने लिए चूज किया है. सो यू कैन ऑल्सो चूज दोस काइंड ऑफ रॉक्स फॉर योर सेल्फ. And yes, that is pretty much your exercise for today. So time is 9:49. We still have 10 more minutes. So if you guys have any questions or anything that you guys want to share, you can do so now. Okay, so none of you have any questions. All right, okay. So is it okay if I choose more than 3 people? No. So for today, because we're just starting out, so just choose 3 people for today. आज आप 3 लोगों को कर लो, and then if you want to continue with that exercise, तो हम आपको कल बताएंगे कि अगर आपको 3 से ज़्यादा करना है तो क्या कर सकते हैं. But for today, just collect 3 pictures and not more than that. Okay. And what else? Okay, Shantanu, no, you're not banished from your rights to read or answer questions.
but I just want new people to participate because you have been doing these sessions for the past 2-3 months. So that is why I just want more people to participate and interact. I Anybody really else? enjoyed reading it. Thank you so much. Thank you so much for reading. You read really well. I mean, every emotion, every word. It was amazing. Yeah. Okay. Anybody else who wants to ask any question? या कुछ share करना है आपको related to yesterday's exercise? So yesterday, like this other friend of mine, she also started leading her session this month onwards. So just like me, usne bhi like right now she's just doing with 2 to 3 friends of hers. तो उसने क्या किया था yesterday when she did this exercise. तो पहली बात तो जब उसने ये conduct करना start किया तो उसने ये बताया कि she is actually understanding this book even better and उसको gratitude और अच्छे से feel हो रहा है. And कल जब उसने count your blessings वाली exercise की थी तो उसने background में like she put on some meditation music and उसके ऊपर she was writing down her blessings and reasons लिख रही थी and then she was being grateful for it. And when she was doing this and once when she was going through a list, तो I don't know it was because of the music or something, तो उसको वो gratitude और अच्छे से feel हो रहा था and कल उसको वो exercise करके और भी ज़्यादा अच्छा feel हुआ था. So she's also been attending and doing these sessions for the past 2 or 3 months. I think this is her third month. 2 महीने से उसने attend किया था and third month now she's leading with a few friends of hers. So yes, तो उसको ज़्यादा feel हुआ था and same way for me कल जब मैंने किया था. So कल now how I do my exercises is कि जब भी मैं count your blessings वाली exercise करती हूँ, I write down my blessings and the reason why I'm grateful for each of these things. And जब मैं उनको वापस read करती हूँ and whenever I say thank you, thank you, thank you, I just close my eyes and जो भी चीज़ लिखी थी मैंने, I just picture that. I picture that thing happening again and again. जैसे जैसे मैं उसके लिए thank you बोल रही हूँ. So that way because आप अपने mind में अगर आप कोई चीज़ की image देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. You feel more excited. So that just helps me feel more grateful about that particular blessing. So if you guys also want, you can do the same thing for yourself कि आप उसको पढ़ सकते हो and when you are saying thank you, thank you, thank you for each blessing, तो हर blessing के बाद just close your eyes and picture that thing and उसके benefits, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, just imagine that reason and just say thank you, thank you, thank you. So suppose कल I will just read one of my blessings. Meanwhile, yes, Satvik, you have a question, so you can ask your question. Yeah, just a circumstantial thing that happened yesterday is that I'm taking care of my friend's dog for a while. Okay. So the thing is, the dog's leash is broken. Therefore, I have to tie the dog's leash to its collar. So I was just, while I was taking him for a walk, I was just imagining what if just like the leash opens up and then he runs away to the main road. Yeah. So a couple of times this has happened, but usually he just stays where he is and like doesn't run away. And I was just imagining the possibility of it, and then it really happened. Like, because the moment the leash opened and the dog ran away onto the main road, I'm like, so here's the thing. The question is that do negative thoughts have lesser time delay over like positive thoughts? Yes, so that's the thing. हमें जो नेगेटिव चीजें होती है वो हमें ज्यादा इजीली फील हो जाती है. तो अगर कंप्लेन करने में ना हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती बिकॉज हम बचपन से इतनी जल्दी जल्दी वो करते आ रहे हैं. सो इट्स बिकम सेकंड नेचर टू अस कि कंप्लेन करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है. बट अगर कोई आपको वही सेम चीज के लिए somebody asks you to look for good things, then that becomes difficult. And why is that? Because हम बचपन से हम वो चीज़ अपने प्रैक्टिस में हमने लाई नहीं है कि वी टॉक अबाउट गुड थिंग्स मोर या वी टॉक अबाउट आवर ब्लेसिंग्स मोर. नन ऑफ अस डू दैट. मोस्ट ऑफ अस आर लाइक हम जो कैजुअल टॉक्स भी करते हैं, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था. सपोज 2 लेडीज आर टॉकिंग, 2 हाउसवाइफ्स है, वो एक दूसरे से कॉल पे बात कर रही है एंड दिस लेडी वो दूसरे को कॉल करके पूछती और बताओ यार आजकल काम वाम कैसा चल रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. Then this other lady is like instead of saying good things that I am so happy कि मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है या आई एम एबल टू फाइंड a lot of other things that I've always wanted to do but मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, but finally because of the lockdown I have that time for myself. उसके जगह वो लोग like what generally I have heard ladies saying is
कि यार क्या बताऊं, मेड तो आजकल आती नहीं है, सारा घर का काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, एंड यू नो इट जस्ट बिकम्स सो हेक्टिक। बच्चे भी पूरे दिन मुझे इरिटेट करते रहते हैं, या खाना ज्यादा बनाना पड़ता है, या ज्यादा सेवा करनी पड़ती है लोगों की। सो यू नो दे जस्ट ऑटोमेटिकली पहली चीज यही आती कि क्या यार क्या ही बताओ, ठीक ही चल रहा है सब कुछ। सो नोबडी यू नो टॉक्स अबाउट द गुड थिंग्स। सो बिकॉज हम बचपन से ही हम ऐसी ही बातें करते आए हैं एक दूसरे से, so it's just easier to right now attract negative things much more easily because हम बचपन से वो चीज करते आ रहे हैं। so we feel those emotions much more easily, but अगर आपको कोई बोलता है कि आपको उस चीज के लिए grateful होना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, because we have not been conditioned that way. So it's time that we you know, so that is why ये जो 28 days की exercises है, it's been designed this way कि धीरे धीरे आपके जो भी पुरानी मसल मेमोरीज थी, या जो भी आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स थे, इट विल स्लोली स्लोली वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड ये चेंज होता मिलेगा आपको। सो यस, ग्रैटिट्यूड अभी आपको एक दिन में नहीं आएगा, अभी आप स्टार्ट आउट ही कर रहे हो। सो 3-4 दिन के बाद यू नो आफ्टर अ वीक आई विल आस्क यू गाइस कि आप जब फर्स्ट डे पे अपना ग्रैटिट्यूड दिया था आपने, और जब आप 7th डे पे अब जो आप फील कर रहे हो, यू विल यू नो डेफिनेटली फील कि अब बहुत ज़्यादा ईजिली आपके लाइफ में आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। A follow-up question regarding thinking about positive things. Okay, yeah, you may ask. Yeah. So usually when you think about positive things, or like when you feel grateful for things, is that does the thought itself push you into action towards those things? For example, yesterday you were talking about your dreams, right? So you said think about it more specifically, because maybe you're trying the thought itself will push you to action towards those things. Is that how it happens? Okay, yeah. So generally, if you know if you are doing something, so सबसे पहले उस चीज का thought ही आपके mind में आता है, and then you know you do that thing. Sometimes हमें वो thoughts realize हो जाते हैं, we are consciously thinking about a few things, and some things we do unconsciously, but at the end of the day, so हमारे पूरे दिन में like more than 60,000 thoughts at least क्रॉस आर माइंड्स। तो हमें सब तो यू नो वी कैन नॉट एड्रेस, हमें रियलाइज भी नहीं होता है क्या किस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे हैं, बट यस थॉट्स ही पहले आते हैं एंड देन इट लीड्स टू एक्शंस। सो यस, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Okay, perfect. All right. So yes, thoughts are first. Affirmations have helped a lot. Yes, affirmations is also a really good way. I also, when I go off to sleep, I have downloaded a few audios. I have in fact purchased a few audios, which includes subliminal messages and affirmations. And ये जो audios होते हैं, these are recorded on different frequencies, which have a healing effect on your mind and your body and everything else. So affirmations, जिसको नहीं पता है what affirmations are, so affirmations can both be negative and positive. Affirmations ऐसी चीज होती है, so if somebody tells you कि तुम यार अगर कोई अगर कोई आपको लगातार बोल रहा है, हर रोज बोल रहा है कोई इंसान, this person is appreciating you कि यार तुम कितने ज्यादा talented हो, you are such a nice person, you know you are born to do great things. तो अगर आपको कोई ये चीज कोई रोज बोलेगा, all these good things कोई रोज बोलेगा, आपको इवेंचुअली आपको भी फील होएगा दैट यस यू नो आई हैव वांट टू डू ग्रेट थिंग्स, आई विल यू नो चेंज दिस वर्ल्ड एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज आप वही चीज सुनते हुए आ रहे हो। सो दोज आर लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस इज एनीथिंग जो आप इफ यू लिसन टू समथिंग कंटिन्यूसली एंड उसका इम्पैक्ट जो आपके थॉट्स पे आता है, सो दोज आर बेसिकली एफर्मेशंस इन शॉर्ट। and if you want you know a more technical meaning, then just look it up on Google and you know आपको मिल जाएगा। and नेगेटिव एफर्मेशंस क्या होते हैं, ये भी हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा है हु इज नॉट यू नो गुड इन स्टडीज, तो आसपास के सारे लोग उसको क्या बोलते हैं कि पढ़ लो यार, कितना बेवकूफ है ये, तो तुम तो जितना भी पढ़ लोगे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम ये तुम वो एंड स्टफ लाइक दैट, कि फेल हो जाओगे या तुम्हारे बस का नहीं है, यू आर यू नो वेरी लेजी एंड स्टफ लाइक दैट। सो दोज आर लाइक नेगेटिव एफर्मेशंस। एंड फिर इवेंचुअली क्या होता है, जो इंसान सुन रहा होता है उसको भी लगता है कि हाँ यार, मतलब मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, नो मैटर हाउ मच आई वर्क, I will still not score good marks or I will fail and stuff like that. So affirmations are both positive and negative. So if you want, you guys can look for, you know, positive affirmations related to anything. Money se related, you can look for positive affirmations on YouTube. Relationships se related, you can look for affirmations. So आप different topics आप लिख सकते हो and you will find all those audios also on YouTube.
Okay, Roli Singh, आपको story share करें. Yeah, sure, definitely. If you want to unmute your. Okay, so I'm an educationist. Can you hear me? Yeah, we can. Can you hear me? Yes. Okay, I'm an educationist, but recently I have started with workshop. So I've started this workshop where traveling is involved, and I was 18 to 20 people to Birbiling for paragliding, and it around 24th of January, I planned this trip and it was a big responsibility. And what happened that my friend told me ki that is a time when it's going to snow. So the main attraction of going to Bir is paragliding. And if it snows, everyone will be disappointed and you have made this plan. But already I believe if I have made a plan, I will go about it and not look back. So first I intimated in the group that there's a possibility of snowfall and we can go with the plan ahead or some other thing can happen. But I was very sure of myself, and this I've been practicing that if you want a particular desire, I make that thing my wallpaper. So मैंने Yeah. एक बिरबिलिंग की पैराग्लाइडिंग की पिक्चर ली and I made it into my WhatsApp wallpaper, and every day I used to write these informations that my trip will be a successful one with everyone, and everyone going with me will have the paragliding experience, and it happened. So Yes. this is my way of believing things and making things, happen. Right. So we will also talk about this. So this is जो अभी रोली जी ने जो example share किया है, that's basically a vision board. So I also have a vision board for myself. So vision board कैसे बनाना है, कैसे करना है. We will also, come to that thing later, like in a few days. So there are different steps to manifestation, law of attraction. First is your positive thoughts, second is believing in it, and then imagining that thing. So why am I saying कि आप उस चीज को imagine करो या visualize करो? Because visualization is like the third step, and visualization is a very very powerful thing. आप जो चीज देख सकते हो, if you can feel, so your brain, it doesn't understand the difference between what you are imagining and what you're actually seeing. अगर आप अपने ब्रेन को एक पिक्चर दिखा रहे हो जिसमें सो सपोज यू आर इमेजिनिंग अ थिंग एंड आप उसको बहुत क्लियरली देख सकते हो, या इन हर केस शी यूज्ड अ पिक्चर टू लुक एट एंड मेक हर बिलीव दैट वो ट्रिप अच्छी हो रही है. सो बेसिकली एनीथिंग, अगर आप कोई पिक्चर रख सकते हो एंड उसमें अपने आप को डाल लो एंड इमेजिन, इफ दैट हेल्प्स यू विजुअलाइज थिंग्स बेटर, do that. And अगर आप imagination में if you can see everything clearly, then do that, because your brain doesn't understand the difference between what images you are presenting to it. आप जो भी अगर imagine भी कर रहे हो but आपको pictures दिख रही है, तो आपके brain को यही लगता है that it is actually happening, and that is when you start attracting those things in your life. So jab, like we come to that chapter later on, vision board and all of those things, I will also share my vision board. So yes, thank you so much, Roli ji, for sharing that. It was really amazing to hear about your experience. And anybody else who would like to talk about anything or add on to anything? Yes, yes, yes. I just wanted to add something to the question that Satvik asked about the thing that if negative thoughts manifest more quickly than the positive thoughts. Okay. So in science also we have two things, electrons and protons, the positive and negative charge. And the thing is that the electron, which is the negative charge, has an ability to move and proton doesn't move. So that's the reason why electrons reach faster than protons anywhere. So that's why negative charge actually manifests. There is a theory behind this that negative charge actually manifests. क्योंकि अगर आप सोचोगे negative charge, तो negative charges have an ability to move. Unlike protons, protons doesn't have an ability to move. They stay stable. So उन्हें manifest करने में शायद हल्का सा time लगे, लेकिन negative charge बहुत जल्दी manifest होते हैं because they come to you. Okay, right, yes. So I have a few more examples, but the time is 10:05, and if any one of you wants to leave, then before you guys leave, thank you so much for joining me for today's session. It was wonderful having all of you here and listening about your experiences, hearing about your experiences. And thank you once again. Okay, Neeta ji isn't here, but like thank you once again for reading the chapter for us in English. So if you guys want to exit, leave the meeting, you can. But if you want to stay, then this one example, last example that I want to share, and then I will also end the meeting, and then you guys can all also move ahead with your day. So जैसे शांतनु ने बोला कि negative charges they move and positive जो protons होते हैं, protons, right, the positive charge, it stays in one place.
सो सेम वे अगर आपका मूड अच्छा होता है एंड उस टाइम पे कोई अचानक से आके आपके ऊपर पानी डाल दे तो आपका मूड ना तुरंत खराब हो जाता है एंड उसके बाद आप बहुत अच्छे मूड में थे, किसी ने पानी डाल दिया, मूड तुरंत खराब हो गया एंड उसके बाद व्हेन पीपल ट्राई टू चीयर यू अप तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है. So I don't know, it's just been like that. जैसे इसने proton and electrons का example दिया, I think that's a very very good example. So we can all take something from that and apply that in our lives. तो ये टेंशन नहीं लेनी है. So basically हमें नेगेटिव चीज़ पे we have to stop talking also about negative things. धीरे धीरे हम वो कैसे करेंगे हम वो भी सीखेंगे. But in advance also I am telling you guys कि if you can refrain from talking negative things about anything, या अगर आप किसी को ऐसे जैसे ignorant talks की जो हम करते हैं casual talks, तो from now onwards start being conscious about whatever words you are speaking and whatever it is that you are thinking. जैसे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको अगर आप कोई पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो, सो डू दैट. एक और एग्जांपल है, अगर आप सपोज अगर आप किसी बच्चे को बोले who's नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, तो उसको बोलने के बजाय कि कि यार तुम तो पढ़ाई में बेकार हो, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो क्या कुछ चला जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से द सेम थिंग टू दैट पर्सन इन एन एनकरेजिंग वे. तो उससे क्या होता है कि बिकॉज यू आर गिविंग आउट पॉजिटिव थॉट्स, तो जब तक आप कंप्लेन करते रहते हो तो वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, बिकॉज उसके माइंड पे भी यू आर आप वो नेगेटिव एफर्मेशंस जा रही है एक तरीके से कि यार मैं तो बेकार हूँ पढ़ाई में, या थोड़ा पढ़ लूंगा तो क्या ही हो जाएगा. सो it's just not a very healthy way of talking to anybody. So if you can just talk to that same person in an encouraging way ki yaar I believe in you that if you work a little more hard then you can definitely get better marks, I believe in you. So agar aap chahte ho aapka bachcha acha kare, then instead of saying stuff like this you can talk to them in a very encouraging way. And I'm sure यहाँ पे जो भी parents है, if you've done this thing, आपको भी पता होगा कि डिफरेंस क्या होता है अगर आप किसी चीज़ को ऐसे नेगेटिव वे में बोलते हो या उसी सेम बच्चे को आप थोड़े फ्रेंडली एंड पॉजिटिव तरीके से बोलते हो. सो द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. So that's just what I think from my experience and from what I have seen. And yes, that's pretty much from my side. Anybody else who wants to talk about anything? And in maths also, if we just add minus and plus signs, we come up with a subtraction and a negative. So yes, that's algebra for all of us. Minus and plus jab saath mein hota, so it's a minus sign. And minus saath mein hota, so that's a plus, but we will come to that later. Okay, so anybody else who wants to share anything? Okay, I think we're good to go. So thank you so much once again, everybody, for joining me for today's session. It was amazing having you all here. And I will see you all tomorrow at 8:50 a.m. So if you guys have any questions or doubts, then please join the session by 8:50 a.m. I'm starting at 10 minutes we keep for all these doubts so that we can start with the reading of the chapter in time and we can finish the chapters in time. So please join the sessions by 8:50 and okay, see you all tomorrow. Thank you.